Hi, good evening, everyone. I hope all of you are doing well, and I hope I'm audible and my screen is visible. So, if everything is fine, please give me a go ahead so that we can start with the session. Also, meanwhile, I'll also look at it on my phone so that I don't miss out on any questions. So, look at it. All right, yeah. So, I think everything is good to go. The sound is fine. I can see myself. And we are live now. All right, so welcome everyone to this session today. I think people are still joining, so it's fine. So I just introduce the session today. Again, today we have a session on reading comprehension. So we have already done a couple of reading comprehension sessions in terms of the daily drills that we are running, and we have discussed many of the concepts that we need to learn, how to read a passage, what exactly to do in terms of yeah, people are logging in, right? Yes. So what to do in terms of understanding what the passage is, what all are the key pointers, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, how to pay attention to the adjectives, adverbs, how to ignore the nouns that are there, how to figure out whether the author's position is that of for the topic or against the topic, and so on and so forth. तो वो सारी चीजें हैं. So that was what basically we learned in the first couple of reading comprehension daily drills that we did. So we'll basically be continuing from there, more or less. And today again we have a couple of passages that we have taken for today's session. And if you have seen the test, then I'm sure you would have seen the kind of questions that we can expect, right? So if you haven't read the passage, so there is of course an option that you can take it in the form of a test, and then you will be able to see this particular, and then you can see this video as well in terms of what the solutions look like and so on. But for all practical purposes, it's basically what you would expect in any RC, right? So that's what we are looking at in this particular context. Right? Yes. So that's basically what we are going to do. So let's do one thing. What I will do is I'll just flash the first RC that is there on the screen. I'll show you all the slides that are there. You can just go back and forth in the video itself, and you can see it for yourself what exactly is the passage and what exactly are the questions. And एक बार solve it on your own. Try to figure it out what your answer would be to a particular question, and then we will discuss it thoroughly. So I'll just show you the first passage and the questions that are there. So the first passage has 6 questions today, and the second passage has 3 questions. So we are going to do 9 questions today in total. This is the first passage that we can see. So creativity is at once our most precious resource and our most inexhaustible one. So this is the passage. This is the first slide that we have. So the first 3 paragraphs you can see here. Then you have another couple of paragraphs that are here. And these are the last couple of paragraphs that are there. Okay. So what you can do is I'll just go back to the second slide. So this is this is paragraph number 4 and paragraph number 5. So that was one. And yeah, and then you have this. All right. So this is paragraph number 6 and 7. And then you have this is question number 1. In the author's view, cities promote human creativity for all the following reasons, except that day. And we have 4 options here. Then this is question 2. The author uses ironic in the third paragraph to point out that. So that is question number 2 that we have. That's question 3, central idea. So again, a very mainstream question that we have in terms of what the central idea of the passage is. This is question 4. Jane Jacobs believed that cities that are more creative do what or are what. Then this is question 5. The 1968 study is used here to show that, and there are 4 options that have been given.
And this is the last question, right? The author's conclusion about the most creative cities in the US, which as we mentioned in paragraph 6, are based on his assumption that something, something, something. Okay, so these are the 6 questions that are there. I'll go back to the passage again and I'll stay there. So what you can do is you can just have a look at the passage once. You can go back in terms of the video and you can have a look at the passage once. Try to solve it on your own. I'll give you maybe 3-4 minutes to read the passage and then we can start with the session. So till then, if there are any questions, anything you would like me to elaborate on, let me know. I can do that, and till that point in time, others can maybe try out this passage again. Some of you would have taken it as a test, but would not have had time to go through the entire set or the entire or the both the passages rather, and all the questions. You can do that now as well, and then we'll discuss the solutions to these particular passages. Okay, so I'll just wait for some time, and then we can start solving this. Yeah, just check if there are any comments. Also, I hope all of you are going through all the videos that we put up on a daily basis. So we have been creating a lot of content over the last month or so. There are a lot of resources available on the YouTube channel. So have a look at all of them. Recently, we did 3 videos on the syllabus for each of the 3 sections that are there. We also looked at the selection, the ways in which you select the best questions for each of the sections. So we did that. Today we have a video that is up, which has been getting good response, which is 150 days to CAT. So what should be your preparation plan for the coming 5 months if you plan to crack the CAT 24? I have spoken mostly about the mental aspect, right? How to stay motivated, how exactly to prepare a study plan, and so on and so forth. So those things are also there. So have a look at those things. And otherwise also there is a surprise that is coming up on Sunday, as I mentioned. So we will mostly release it tomorrow, as to what exactly are the specifics of the surprise. But I would strongly urge you to keep yourselves free at 11 a.m. on the coming Sunday, so that you get to experience the workshop that we are going to do. So that is basically something that is going to happen. And of course, there are a lot of other things that are going on. So you can check out the puzzle videos that are there. So we have a destination DILR playlist wherein we solve quite a few puzzles. So we did something on Sudoku, or rather Kakuro, Hitori, Einstein's puzzle, and so on. So that is something we have been doing. And yeah, so that's basically how things are going on. Right. So I hope all of you have had a chance of looking at this particular passage. So what we'll do is we'll read the passage together and then we'll try to solve the questions that are there as a part of this passage. Okay. So let's get going with this one. Now, creativity is at once our most precious resource and our most inexhaustible one, right? At once our most precious. So it is very important. मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती resource है. That's what we are trying to say. And our most inexhaustible. Inexhaustible मतलब does not finish or does not get over. ठीक है, तो ये होगा as anyone who has ever spent any time with children knows. So अभी children introduce कर दिया, तो यहाँ पे creativity के बारे में बात हो रही थी. तो creativity, because it is the first word and it has been spoken about in such nice words, we are saying that creativity is the entire point of this passage. ठीक है, और अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सीधा children पे पहुंच गया अब यहाँ. As anyone who have spent any time with children knows, every single human being is born creative. So everybody is creative. Every human being is innately endowed with the ability to combine and recombine data. So data, perceptions, materials, and ideas, and devise new ways of thinking and doing. Okay? So every human being is gifted. So creativity is an important resource. Creativity बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, डज नॉट फिनिश बोला गया है. वी ऑल्सो नो दैट चिल्ड्रन को अगर ऑब्जर्व किया गया है, सो इफ यू आर ऑब्जर्व चिल्ड्रन, तो यू विल सी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटिव.
right? Everyone is creative. That has been given to us. Fine. Now, what fosters creativity? तो अब यहाँ पे ये पता चल गया कि everybody is creative. Now we have to figure out what fosters creativity. What fosters creativity मतलब किस चीज से creativity grow होता है, right? How does creativity grow? Now, even if you don't know what fosters means, it's okay. There is a question that has been asked. More than anything else, the presence of other creative people. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि other creative people होना बहुत जरूरी है for creativity to grow. Now, this is very important. राइट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तुरंत आंसर भी दे दिया. सो देयर इज अ क्वेश्चन एंड दैट इज वन आंसर. दैट आंसर हैज बीन गिवन टू यू अपफ्रंट और कुछ उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. Now what has happened? The big myth is that creativity is the province of great individual geniuses. A big myth बोला है, big again. As I mentioned, adjectives, right? So this is an adjective. Big myth. Myth मतलब गलत, झूठ बात है ये, right? Something that has been propagated by people. It is not true basically, right? What is not true? That creativity is the province of great individual geniuses. तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अदर क्रिएटिव पीपल बोला है, बाकी लोगों की बात की है, एंड यहाँ पे इंडिविजुअल को बोला है कि भाई ये तो मिथ है कि इंडिविजुअल लोग क्रिएटिव होते हैं करके. दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड हियर. In fact, creativity is a social process. Again, very important. ये आंसर दे दिया, creativity is a social process करके यहाँ पे the question has been answered कि what does it mean to be creative or how does one become creative in the first place. Our biggest creative breakthroughs come when people learn from, compete with, and collaborate with other people. Again, we are talking about other people. Now, how does it increase? How do you increase creativity? By interacting with other people. Okay? So I'll just write interacting with other people. Fine. So how do you increase creativity? By interacting with other people. That's it. And it is not an individual thing. यहाँ पे बोला गया. So this is what it says. Creativity बहुत important है. Children को देख के पता चलता है कि everybody is born creative. And also we can say that creativity को increase कैसे करेंगे? By interacting with other people. That's it. Cities are the two fronts of creativity. Fronts होगा I think. Are two fronts of creativity. With their diverse populations, dense social networks and public spaces. तो diversity यहाँ पे आ गई. Dense populations मतलब lot of people are there. Dense social network sorry, and public spaces. तो ये सारी चीजें आ गई यहाँ पे. Where people can meet spontaneously and serendipitously. अब serendipitously का मतलब अगर नहीं पता तो भी चलेगा, but serendipitously is by chance, luckily. ठीक है, तो ये होगा. दे स्पार्क एंड कैटलाइज न्यू आइडियाज. सो वेयर पीपल कैन मीट, तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां पे दे विल स्पार्क एंड कैटलाइज न्यू आइडियाज विद देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंस. अगेन फाइनेंस एक चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है, ऑर्गेनाइजेशन एक बताया गया है और ट्रेड बताया गया है. तो ये सारी चीजें विल ऑल्सो अलाउ पीपल टू मीट इच अदर एंड दे विल अलाउ दोस आइडियाज टू बी स्विफ्टली एक्चुअलाइज. एक्चुअलाइज मतलब रियलाइज करना. तो आइडिया दिमाग के अंदर होना एक चीज होती है एंड इंप्लीमेंट करना एक दूसरी चीज होती है. तो सिटीज के अंदर द आइडियाज कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंट. ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल. या ऑलराइट. सो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि भाई ये पैसेज में, ये पैराग्राफ में क्या बोला है, सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Cities are important because they give you a platform to meet other people and they also give you a platform to realize your ideas, actualize your ideas. ठीक है, implement your ideas. That is what we have been mentioned. That is what we have been told. Then as for what staunches creativity, अब staunches क्या है मेरे को नहीं पता, बट ठीक है चलो staunches creativity. तो पहले अगर मेरे को बोला है कि what fosters creativity, तो staunches का मतलब होना चाहिए opposite of that, right? बट अगर नहीं भी पता, it's okay. That's easy. If ironic. Now ironic is again a word that we had seen earlier also. Irony क्या होता है वो हमने देखा था कि मतलब कोई चीज करनी है बट उसका ऑपोजिट ही चीज हो रही है वहां पे, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज द वेरी इंस्टीट्यूशंस दैट वी बिल्ड टू मैनेज, एक्सप्लॉइट एंड परपेचुएट द फ्रूट्स ऑफ क्रिएटिविटी. तो जो वेरी इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस है मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास, our big bureaucracies and sad to say too many of our schools, राइट? तो ये क्यों अपनी क्रिएटिविटी को प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएटिविटी नीचे क्यों जा रही है? बिकॉज ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है हमने जो जहां पे हमने सोचा था कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी, so the institutions where we had thought that our creativity is going to increase and improve, right? People will be able to express their creativity. Those institutions are the ones that are bringing creativity down. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रिएटिविटी इज डिसरप्टिव, राइट? क्रिएटिविटी इज डिसरप्टिव मतलब वट एवर हैज बीन द नॉर्मल सिनेरियो, क्रिएटिविटी विल चेंज दैट नॉर्मल सिनेरियो कंप्लीटली. Schools and organizations are regimented, right? Regimented, if you know, there is an army regiment, let's say for example. So regimented basically means everything is uniform. Similarly standardized, standardized भी वही चीज है. Everything, everyone will think alike, everyone will look alike, everyone will appear for the same test, everybody will prefer for a particular career choice and so on and so forth. And stultifying, stultifying again means something similar
कि सबको नीचे लेके आएंगे, सबको एक लेवल पे लेके आ जाएंगे, एंड दे विल नॉट रियली एनकरेज क्रिएटिविटी, राइट? सो दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ दिस। तो यहाँ पे बोला है कि कैसे इंप्रूव करते हैं, सिटीज इंप्रूव और सिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी। यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इंस्टीट्यूशंस। तो जो इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए थे वही इंस्टीट्यूशंस क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं, दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ। Now, the education expert Sir Ken Robinson points to a 1968 study reporting on a group of 60। ये सब पूरा इसका ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है। There is a study that we know who were tested over time for the ability to think in out of the box ways। तो क्या स्टडी था? Ability to think in out of the box ways। तो अलग क्या सोच सकते हो? That was basically the study। When the children were between 3 and 5 years, 98% मतलब बहुत ही बड़ा नंबर achieved positive scores out of the box thinking में। 8 to 10 वाले जो बच्चे थे, 32% मतलब 98 से फटक से कम होकर 32% पे आ गया है। ओनली 10% फ्रॉम एजेस 13 टू 15, 25 ईयर ओल्ड पे पहुंच गए ना, तो 2% लोग ही पास हुए थे उसके अंदर। तो जो 98% बच्चे जो क्रिएटिवली आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, द नंबर रिड्यूस सिग्निफिकेंटली व्हेन दे बिकेम 25 इयर्स ओल्ड। ठीक है, तो 25 ईयर ओल्ड का जो टेस्टिंग किया था वहां पे सिर्फ 2% लोग पास हुए थे। दैट्स व्हाट इट मींस। बाय द टाइम वी आर अडल्ट्स आवर क्रिएटिविटी हैज बीन रंग आउट ऑफ अस। रंग आउट मतलब जैसे हम कपड़े सुखाते हैं ना, तो विल रंग our shirt or clothes or whatever, and then it will, the creativity will flow out of it, drip out of it, and पूरा creativity खत्म हो जाएगा by the time we are adults। I once asked the great urbanist Jane Jacobs, अब another person has been introduced। यहाँ पे क्या बोला है कि भाई मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उन लोग का क्रिएटिविटी निकल जाता है, and has been wrung out of us, मतलब मैं खुद नहीं उसको निकाल रहा, someone else is doing it, right? The cloth does not leak water of its own, right? You have to wring it and then you will squeeze water out of it. Similarly, creativity will get squeezed out of you because someone else is working on it. That is the point of this. Fine. Now, what is happening here? I once asked the great urbanist Jane Jacobs what makes some places more creative than the others. She said essentially that the question was an easy one. Again, doesn't matter. क्वेश्चन क्या था कि भाई मतलब कुछ प्लेसेस ज्यादा क्रिएटिव क्यों होते, दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन, राइट? ऑल सिटीज शी सेड वेर फिल्ड विद क्रिएटिव पीपल। सो अगेन जो पहले बोला था वैसे ही है, ऑल सिटीज, पहले बोला था कि ऑल पीपल आर बोर्न क्रिएटिव, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल सिटीज वेर फिल्ड विद क्रिएटिव पीपल। दैट्स आवर डिफॉल्ट स्टेट एज पीपल, वी आर ऑल क्रिएटिव, बट some cities had more than their shares of leaders, people and institutions that blocked out that creativity। so अगर सिटी ए है लेट्स से एंड सिटी बी है, सिटी ए में देर आर 10 क्रिएटिव पीपल, सिटी बी में भी देर आर 10 क्रिएटिव पीपल, तो दोनों इक्वल हैं। बट क्या बोल रही है, व्हाट इज जेन जेकब सेइंग, शी इज सेइंग दैट सम सिटीज हैड मोर देन देयर शेयर्स ऑफ लीडर्स, पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे अगर एक्स लीडर्स, पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, लेट्स से इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे 5x इंस्टीट्यूशंस है, तो इसकी वजह से ऑल्दो द नंबर ऑफ क्रिएटिव पीपल इज द सेम, दिस सिटी विल बी फार लेस क्रिएटिव कंपेयर टू दिस वन। तो क्वेश्चन वही था, व्हाट मेक्स सम प्लेसेस मोर क्रिएटिव देन द अदर्स, right? But some cities had more than their shares of leaders, people and institutions that blocked out their creativity, and she called them squelchers। तो ये वाले लोग जो होते हैं या फिर ये सिटी जो है पूरे के पूरे कॉन्स्ट्रक्ट को उसने स्क्वेल्चर्स बोला है। अब ये स्क्वेल्चर्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका कोई जरूरत नहीं। forget about what squelchers are, she called them squelchers, so it's a negative context more or less। ठीक है, that's what we are understanding from this particular paragraph। अब लास्ट के दो पैराग्राफ देख लेते हैं। क्रिएटिविटी और द लैक ऑफ इट फॉलोज द सेम जनरल कॉन्टोर्स ऑफ द ग्रेट सोशो इकोनॉमिक डिवाइड और राइजिंग इनइक्वालिटी दैट प्लेग्स अस। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी फॉलोज द जनरल कॉन्टोर्स, अब कॉन्टोर क्या है नहीं पता चलेगा। कॉन्टोर्स आर बेसिकली क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड यू कैन मोर और लेस से द पैटर्न, ठीक है, तो सेम पैटर्न ऑफ द ग्रेट सोशो इकोनॉमिक डिवाइड। सोशो इकोनॉमिक डिवाइड में क्या है, देयर आर सम पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिच, देयर आर सम पीपल हु आर एक्सट्रीमली पुअर, तो काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है, काफी ज्यादा डिवाइड है। अब इसके अंदर एक इनइक्वालिटी है तो वो भी समझ में आ जाएगा। And again, it flows from the previous paragraph. Don't look at sentences or paragraphs as standalone entities। एक फ्लो होना चाहिए ना। तो पहले मैंने बोला कि भाई मतलब इसके पहले वाले पैराग्राफ में मैंने बताया कि बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी दैट इज इन्वॉल्व इन सम सिटीज, द पीपल देयर माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम सिटीज आर मोर क्रिएटिव, सम सिटीज आर लेस क्रिएटिव। तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। तो ये इनइक्वालिटी कैसे हो गया, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू माय ओन एस्टिमेट्स द ऑथर सेज roughly a third of us across the United States and perhaps as much as half of us in our most creative cities। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1/3 एंड मोस्ट क्रिएटिव सिटीज के अंदर हाफ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्रिएटिव सिटीज के अंदर 100% ऑफ द पीपल आर क्रिएटिव, नो, मोस्ट क्रिएटिव सिटीज के अंदर 50% लेट्स से, एंड यूएस के अंदर 33.33, 1/3 जो लोग होते हैं ना,
are able to do work which engages our creative faculties. So minority, yeah, half the population will engage in creative work. Other people will not engage in creative work. ठीक है? तो क्रिएटिव फैकल्टीज टू सम एक्सटेंट वेदर एज आर्टिस्ट म्यूजिशियंस, ये सारे जो ऑक्यूपेशंस दिए हुए हैं, राइटर्स, टेकीज, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, एजुकेटर्स, ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये आर्टिस्ट होते हैं। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, रादर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड ऑल ऑफ देम आर क्रिएटिव इन नेचर, एंड दीज पीपल विल डू क्रिएटिव वर्क, एंड दीज पीपल आर दोज ऑफ अस हु वर्क विद अवर माइंड्स। सो जो भी माइंड से काम करते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, दैट इज व्हाट इट सिक्स। सो whoever works with their minds are creative. ठीक है? That leaves a group that I term the other 66%. तो वन थर्ड अगर क्रिएटिव काम कर रहे हैं, बाकी के टू थर्ड्स आर नॉट डूइंग क्रिएटिव वर्क, who toil in low wage rote and rotten jobs. तो मतलब बेचारे बहुत ही कम सैलरी के साथ बहुत ही rotten jobs करते हैं। If they have jobs at all, अगर jobs हैं तो भी उनके बहुत ही घटिया jobs होंगे according to the author. ठीक है? संस्कृत, I'll just check if those are right. Let me just see once. ठीक है? In which their creativity is subjugated, ignored और wasted. तो इन लोग को creativity अपना express करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं है बेसिकली, 66% ऑफ द पीपल। सो क्रिएटिविटी इटसेल्फ इज नॉट इन डेंजर, इट इज फ्लरिश, इट्स फ्लरिशिंग इज ऑल अराउंड अस। सो इट्स फ्लरिशिंग, ये तो हमको दिख रहा है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, कल्चर, रैपिडली रिवाइटलाइजिंग सिटीज एंड सो ऑन, तो है क्रिएटिविटी। बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इफ यू वांट टू बिल्ड अ ट्रूली क्रिएटिव सोसाइटी। तो पूरे के पूरे सोसाइटी को अगर क्रिएटिव करना है तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव, राइट? That supports and rewards the creativity of each and every one of us. Now this is very important, each and every one of us, because यहाँ पे we are saying that 66% of the people cannot express their creativity, and यहाँ पे we are saying that each and every one of us should be creative. तो उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं बताया। There are no solutions in this particular passage. We have just been told, and we'll just run through the paragraphs that we had. First paragraph क्या बोलता है? Creativity is very important, right? If you look at children, you will realize that everybody is born creative. How do you increase creativity? By interacting with other people. Second paragraph, where do you interact people? You interact with other people in cities. So cities are a very good place जहाँ पे creativity improve होना चाहिए, right? But creativity कम कहाँ पे होता है? Where does creativity fall flat? या when is creativity not encouraged? Creativity is not encouraged by the same institutions that we had created to encourage creativity. ठीक है? तो जो institutions हमने बनाए थे, schools, colleges, जो भी, उसका point था कि लोगों को creative बनाना है। But those are the institutions that will staunch creativity. ठीक है? Staunch creativity मतलब कम कर देंगे creativity. क्यों कम करेंगे creativity? Because they are regimented, standardized and stultifying. तो सब एक जैसे हैं, इसके लिए वहां पे creativity बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दी। देन व्हाट हैपेंस, एक स्टडी बताया गया, दो स्टडीज है बेसिकली। वन स्टडी सेज कि चिल्ड्रन जो थे ना, उनका जब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सुना था तो 98% लोगों का सही आया था। बट जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कम हो जाता है। सो एज वी बिकम एडल्ट्स और क्रिएटिविटी हैज बीन रन ऑफ, दैट्स इट। देन जेन जेकब्स को पूछा, भाई ये इनइक्वालिटी क्यों है, व्हाई आर सम सिटीज और सम प्लेसेस मोर क्रिएटिव देन द अदर्स? उसने बोला कि भाई मतलब क्रिएटिव पीपल हर जगह पे हैं, but there are some institutes at or institutions at some places which will again stultifying, वो sculpture करेंगे, right? They will जो भी मैं बोला था, they will staunch creativity according to this particular paragraph, the third paragraph that we had. ठीक है? तो वो होगा, and that is basically why your creativity, people will not be able to express their creativity. तो ये बोल दिया, तो दो चीजें बताई गई हैं। वन was the children वाला study, and the second thing वाला, why is this inequality existing? देन व्हाट हैपेंस, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ता है? क्रिएटिविटी में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, फ्रॉम दैट स्टडी ये वाला आ गया। कैसे क्रिएटिविटी में इनइक्वालिटी आ गई? बिकॉज पीपल हु वर्क विद देयर माइंड्स हु आर इन द माइनॉरिटी आर क्रिएटिव, एंड पीपल हु डू नॉट वर्क विद देयर माइंड्स हु माइट नॉट इवन हैव जॉब्स आर नॉट डूइंग क्रिएटिव वर्क। हमको क्या करना चाहिए भाई? क्रिएटिविटी डेंजर में बिल्कुल भी नहीं है, क्रिएटिविटी इज ऑल अराउंड अस, एवरीबॉडी इज क्रिएटिव, बट वी नीड टू एनकरेज पीपल, वी नीड टू सपोर्ट एवरीवन, ईच एंड एवरी पर्सन अगर क्रिएटिव परस्यूट्स में इन्वॉल्व हुआ, then you will grow as a society and you will become a creative society. ठीक है? I hope this entire passage is clear, and it did not take a lot of time for us, by the way. The entire explanation took around 15 minutes, right? And of course you will not have that kind of time during the test, but I explained it in much more detail than what you are expected. ठीक है? So इतना अगर if you are able to manage in this particular passage, out of 6 questions I'm sure you are going to get at least 4 or 5 right. Fine. So let's look at the questions now, and Sanskriti, let's see if your answers are right. So let's look at question number 1 in this particular context. Just give me a second. Yeah. In the author's view, cities promote human creativity for all the following reasons.
एक्सेप्ट दैट डे। तो बोला है ना कहीं पे तो कि सिटीज के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है करके, दैट्स व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस। सो सिटीज विल एनकरेज, विल प्रोमोट ह्यूमन क्रिएटिविटी, राइट? एंड व्हाई डू वी से दैट सिटीज प्रोमोट, और व्हाई डज द ऑथर से दैट द सिटीज प्रोमोट ह्यूमन क्रिएटिविटी? क्योंकि वहां पे दो तीन चीजें दी गई थी। वहां पे बोला गया था कि एक तो मतलब वहां पे देर आर पब्लिक स्पेसेस, डाइवर्स पॉपुलेशंस, सोशल नेटवर्क है बहुत सारे, पीपल कैन मीट स्पॉन्टेनियसली, सेरेंडिपिशियसली, मतलब बाई चांस दे कुड मीट ईच अदर। तो वहां पे वो लोग क्रिएट कर सकते हैं न्यू आइडियाज, स्पार्क कर सकते हैं न्यू आइडियाज। ऑल्सो देर आर फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, जहां पे वो जो आइडियाज है वो रियलाइज भी हो सकते हैं, एक्चुअलाइज भी हो सकते हैं, इंप्लीमेंट भी हो सकते हैं, राइट? सो दैट वाज द होल आइडिया, दैट्स व्हाई सिटीज आर इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। कंटेन स्पेसेस दैट एनेबल पीपल टू मीट एंड शेयर न्यू आइडियाज, परफेक्ट, ये बोला है एग्जैक्टली कि वहां पे बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन होता है एंड देयर आर एवेन्यूज फॉर पीपल टू मीट। सो दिस इज समथिंग दैट इज ट्रू, राइट? अपने को एक्सेप्ट वाला स्टेटमेंट निकालना है। सेकेंड ऑप्शन, expose people to different and novel ideas because they are home to varied groups of people, absolutely yes, diverse set of people, dense population, सब कुछ बोला गया है वहां पे, right? So if you look at this particular thing, diverse population बोला गया है और dense social networks बोला गया है। So because of that, of course, they will be able to uh, foster their creativity, ठीक है? So cities promote human creativity because they expose people to different novel ideas, yes. Third, provide the financial and institutional networks that enable ideas to become reality, yes, actualize करते हैं, right? They can implement the ideas, so this is also true, ये भी सही से बताया गया है। लास्ट वन, प्रोवाइड एक्सेस टू कल्चरल एक्टिविटीज दैट प्रमोट न्यू एंड क्रिएटिव वेज ऑफ थिंकिंग, ये तो नहीं बोला गया है। इनफैक्ट द पैराग्राफ और द पैसेज सेज दैट यू आर ऑलरेडी क्रिएटिव, तो न्यू एंड क्रिएटिव वेज ऑफ थिंकिंग का जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू मीट पीपल, एंड वंस यू मीट पीपल यू विल बी एबल टू डिस्कस योर आइडियाज, एंड बिकॉज देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स वहां पे, यू विल बी नेटवर्क्स, यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज, ये बोला गया है। कल्चरल एक्टिविटीज तो पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी नहीं है, पैसेज में ही नहीं है कल्चरल एक्टिविटीज, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोमोट न्यू एंड क्रिएटिव वेज ऑफ थिंकिंग इज स्टिल पार्शियली करेक्ट, बट कल्चरल एक्टिविटीज का कहीं पे बोला ही नहीं गया है। सो ऑप्शन डी इज द एक्सेप्शन। सो सिटीज प्रोमोट ह्यूमन क्रिएटिविटी फॉर ए बी सी बट नॉट फॉर डी। सो संस्कृति और फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सो लेट मी नो इन केस समथिंग इज नॉट क्लियर, कुछ भी अगर गड़बड़ है, समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एनीवन प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू गो थ्रू द सॉल्यूशन अगेन, बट I think mostly clear हो जाना चाहिए with the kind of, with the amount of uh, thought we have put to the passage and the questions. I don't think that should be an issue, right? Let's see. Second question. The author uses ironic in the third paragraph. Ironic कहाँ पे आया था? जो बोला था ironic, मैंने बोला था कि हमने पहले भी एक बार सुना है और आज भी सुन रहे हैं। Ironic was basically something, or ironic is a concept that says that something was created for the betterment of your life. Let's say for example, but that very thing creates problems for you. ठीक है? सो दैट वेरी थिंग दैट यू हैड क्रिएटेड सो दैट माय लाइफ बिकम्स बेटर हैज नाउ रिड्यूस्ड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो उसको आयरनी बोलते हैं। उसको एक रीजन के लिए मैंने कोई चीज बनाई थी एंड वो चीज को बनाने के बाद उसने, मेरा वो रीजन था, उसको ही नेगेट कर दिया, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो द ऑथर यूजेस द वर्ड आयरोनिक इन द थर्ड पैराग्राफ टू पॉइंट आउट दैट जो इंस्टीट्यूशंस की बात की थी ना, हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे बट वो रेजिमेंटेड हैं, वो सारे के सारे एकदम यूनिफॉर्मिटी के साथ चलते हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई दे डोंट एनकरेज क्रिएटिविटी। सो यहाँ पे पीपल नीड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रादर देन आइसोलेशन टू नर्चर देयर क्रिएटिविटी। ये तो आयरोनिक इसमें कुछ आया नहीं ना, पीपल नीड सोशल कॉन्टैक्ट रादर देन आइसोलेशन टू नर्चर देयर क्रिएटिविटी, यस। तो उसमें आयरनी क्या है इसके अंदर? इट्स अ फैक्ट। इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड टू प्रमोट क्रिएटिविटी इवेंचुअली स्टाइफल इट। तो मैंने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे क्रिएटेड टू प्रमोट, बट उन्होंने उसको स्टाइफल कर दिया। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस, मतलब यही हमको एग्जैक्टली चाहिए था, क्योंकि इट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। The larger the creative population in a city, the more likely it is to be stifled. ये तो कहीं पे भी नहीं बोला गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है। इनफैक्ट स्टाइफल कब होगा? when there are more people or more institutions that stifle creativity, तब प्रॉब्लम होगा। क्रिएटिव पॉपुलेशन बढ़ाने से इशू नहीं है। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। अबाउट दिस वन, लार्ज ब्यूरोक्रेसीज एंड इंस्टीट्यूशंस आर द इनएविटेबल आउटकम ऑफ सक्सेसफुल सिटीज, ये नहीं बोला गया है। यहाँ पे सक्सेसफुल सिटीज का इनएविटेबल आउटकम, इनएविटेबल इज टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, तो ये कहीं पे भी नहीं बोला गया कि भाई अगर एक सिटी सक्सेसफुल है डेफिनेटली देयर विल बी ब्यूरोक्रेसी इन दैट सिटी, ऐसे तो नहीं बोला है कहीं पे भी, राइट? दे आर सेड दैट लार्ज ब्यूरोक्रेसीज एंड इंस्टीट्यूशंस विल स्टाइफल क्रिएटिविटी, वो बोला गया है, बट इनएविटेबल आउटकम सक्सेसफुल सिटीज तो कहीं पे भी नहीं बोला। सो दिस इज फैक्चुअली नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एट ऑल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संस्कृति 2 on 2।
इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड टू प्रमोट क्रिएटिविटी इवेंचुअली स्टाइफल इट. सो जो मैंने बनाए थे इंस्टीट्यूशंस कि भाई यहीं से मेरे को क्रिएटिविटी मिलेगी करके, दोस इंस्टीट्यूशंस आर दी वंस हु विल किल क्रिएटिविटी एंटायर. राइट, सो दैट इज बेसिकली दी आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं जल्दी से. What is the central idea of this particular passage? Right? Now the central idea of this passage. तो passage क्या था? We saw there was one word that kept on appearing in this passage. So let's try to figure out our answer and then let's try to see what happens in terms of the options. तो क्या बोला यहाँ पे? Creativity बहुत important concept है and the entire passage talks about creativity completely. So we are saying creativity, 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 creativity. ठीक है? Important concept. We also know that creativity is fostered. How is creativity fostered? By being with other creative people. So it's a social phenomenon. जितने ज्यादा क्रिएटिव लोगों के साथ हम होंगे उतने ज्यादा हम क्रिएटिव बनेंगे. प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? इंस्टीट्यूशंस क्रिएटिविटी को किल करते हैं. राइट, उसके दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक दो एग्जांपल्स बताए हुए हैं. एंड लास्ट में क्या बताया गया है कि एवरीबडी शुड बी एनकरेज टू बिकम क्रिएटिव एंड फॉलो क्रिएटिव परस्यूट्स. सो क्रिएटिविटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. क्रिएटिविटी इज, you can grow, you can become more creative or you can improve the overall creativity of a society by making people interact with other people. ठीक है. The third thing was institutions की वजह से creativity kill हो जाता है करके. And fourth thing is everybody needs to be creative. That's it. So let's look at the option that talks about these things. Social interaction is necessary to nurture creativity. Very nice. ये तो मतलब बोला गया है कि सोशली मिलोगे तभी तुम्हारा क्रिएटिविटी बढ़ेगा. यस. क्रिएटिविटी एंड आइडियाज आर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग इन ऑल सोसाइटीज. अभी ऑल सोसाइटीज इज अ प्रॉब्लम. The author talks about people not, or one third of the people having creative jobs in the US. वो बोल रहा है वो. बट वो ये नहीं बोला कि सारी सोसाइटीज के अंदर सब क्रिएटिविटी खत्म हो रहा है करके, ग्रेजुअली दे आर डिक्लाइनिंग करके. सो दिस इज नॉट ट्रू एंड बेसिकली दिस इज टू हार्श और दिस इज टू पोलराइज्ड. ठीक है, और दिस इज टू इंटेंस. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑल बोल रहे हैं ना, तो ऑल जहां पे आता है ना वहां पे यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल. ठीक है, दैट इज बेसिकली दिस. तो यहाँ पे तो मतलब ये तो नहीं बोल सकते हम लोग कि पैसेज में ऐसे नहीं बोले कि ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग इन ऑल सोसाइटीज करके. इनफैक्ट द ऑथर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट हाउ क्रिएटिविटी कैन बी इम्प्रूव. सिटीज में जाके बात कर लो, इंस्टीट्यूशंस की वजह से क्रिएटिविटी कम हो रही है करके बोल रहा है. बट देन दे आर सेइंग कि नहीं, मतलब तुमको क्रिएटिव जॉब में काम करना चाहिए, द अदर पीपल शुड बी इंक्लूडेड. तो इट इज नॉट सेइंग कि इट इज डिक्लाइनिंग, इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ इट नीड्स टू बी इम्प्रूव. एट द लास्ट पैराग्राफ इफ यू लुक एट इट ना, सो क्रिएटिविटी इज नॉट इन डेंजर, ये बोला गया है. इट इज फ्लरिशिंग ऑल अराउंड अस करके बोला गया है. तो अगर वो इश्यू है तो फिर डेफिनेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग. ठीक है. द क्रिएटिविटी डिवाइड इज वाइडनिंग इन सोसाइटीज इन लाइन विद सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स. हाँ, अभी यहाँ पे बोला गया है क्रिएटिविटी डिवाइड इज वाइडनिंग इन सोसाइटीज. ये बोला गया है पैसेज के अंदर. जो बोला ना कि कॉन्टोर्स यहाँ पे ये हो रहे हैं करके, दिस वन राइजिंग इनइक्वालिटी, दे आर फॉलोइंग द सेम जनरल कॉन्टोर्स. ठीक है, ये बोला गया है कि क्रिएटिविटी इज डिवाइडिंग. सो देयर आर सम पीपल आर क्रिएटिव, देयर आर सम पीपल आर नॉट क्रिएटिव. बट is that the central idea of the passage? It has been mentioned in one paragraph, but बैक की कोई भी पैराग्राफ में inequality के बारे में बात नहीं की गई है. फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, the two examples that have been given all talk about how creativity should be improved, how people can interact with each other and improve creativity, and how are institutions killing that creativity. ये बताया गया है. That's it, right? Creativity divide has been mentioned in one line, so it is not entirely true. So this is true, साइड में रखते हैं इसको, but it is one statement in that entire passage of 6-7 paragraphs that are there. More people should work in jobs that engage their creative faculties. अब यहाँ पे jobs की बात नहीं हो रही है. The author is saying that they need not leave their jobs. ना सबको थोड़ी आर्टिस्ट बनना है, सबको थोड़ी entrepreneur बनना है, सबको थोड़ी एजुकेटर बनना है. Right? Everybody need not become these professionals only. You can work in a different context, but आपका creativity बाहर निकालना is very important. That is what the author is saying. The author is not saying that everybody should leave their existing jobs, menial jobs. In fact, the author says that some people might not even have jobs. ठीक है, तो वो सब कॉन्टेक्स्ट में से बाहर निकलने के you should have an avenue to express your creativity. That is what the author says, right? The author does not say that everybody should do a job that is creative. तो ये वाला पॉइंट गलत है. जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग क्रिएटिव. दे आर सेइंग बिकम क्रिएटिव आउटसाइड ऑफ जॉब्स आल्सो यू हैव अ लाइफ. ठीक है, तो अब दो ऑप्शंस बचे. सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड द क्रिएटिविटी डिवाइड इज वाइडनिंग. सो ए और सी में से कुछ तो एक आंसर होगा. Right? Now social interaction has been mentioned a lot of times in the initial paragraphs and even last में भी बोल रहे हैं कि social interaction होना चाहिए and society, creative society that supports and rewards the creativity of each and every one of us. Right? So that has been mentioned here. So यहाँ पे we have to ensure that the creativity is channelized. Right? So that is basically the point. तो हर जगह पे social interaction necessary करके बोला गया है.
creativity divide is widening is a fact, but it has been mentioned in only one paragraph. There is only one line. इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो creativity divide is widening in societies in line with the socio-economic trends भी नहीं बोल सकते. It is like socio-economic trends. So it is not exactly कि जहां पे भी socio-economic में inequality ज्यादा है ना, उधर ही creativity की inequality भी ज्यादा है. That is not what the passage is trying to say. It is saying that it follows the same contours. मतलब जो पैटर्न होगा वही पैटर्न यहाँ पे होगा. बट जैसे सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स में बढ़ता जाएगा डिवाइड, वैसे ही क्रिएटिविटी का डिवाइड बढ़ता जाएगा, ये तो नहीं बोला गया. So out of A and C, A is the much more complete or much more consistent option, I would say, because maybe this is present in 4 out of 7 paragraphs. This is present only in 1 out of 7 paragraphs. So numerically भी A will win. So A and C में से A seems the more generalized option. Central idea पूछा गया है. It is not just one. Which of the following is true? ये नहीं बोला गया है. Which of the following is true में C could have also been partially true, but A is more all encompassing. ठीक है. Yes, A will be the answer. Sanskrit. Fine. Yeah, got it. ठीक है. Sure. Let's go to the next one. Let's go to question 4. Jane Jacobs believes that cities are that are more creative do what? Right? तो जेन जेकब्स ने क्या बोला था? Cities that are more creative. तो उसने क्या बोला? भाई दोनों सिटी के अंदर पॉपुलेशन सेम है क्रिएटिविटी का, बट दी cities that are more creative will have fewer institutions that will stifle creativity. ये बोला गया है. Have to struggle to retain their creativity. नो. हैव टू स्क्वेल्च अनप्रोडक्टिव पीपल एंड प्रमोट क्रिएटिव वंस. अब यहाँ पे ना एग्जैक्टली ये स्क्वेल्च वाला वर्ड यूज किया है, स्क्वेल्चर्स करके बोला था, तो दे हैव यूज्ड दिस वर्ड. बट वहां पे बोल रहे हैं क्या कि यू हैव टू रिमूव अनप्रोडक्टिव पीपल एंड प्रमोट क्रिएटिव वंस, तभी तुम्हारा बनेगा. नो, शी इज टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस. तो द प्रॉब्लम विथ लेस क्रिएटिव सिटीज इज दैट देयर विल बी मोर इंस्टीट्यूशंस दैट विल स्टाइफल क्रिएटिविटी. ये बोला गया है. So of course, people के बारे में कुछ बात नहीं किया गया. People need not be thrown out of the city for the city to become more creative. No, no. So ये तो मतलब नहीं बोला है. This is absolutely wrong. Although they are using the word. Third, have leaders and institutions that do not block creativity. So as we had drawn in that diagram as well, एक छोटा सा diagram बनाया था हम लोगों ने. City A and City B. 10 creative people, 10 creative people. X institutions, 5x institutions. ये 5x institutions इस City B को का creativity stifle कर देंगे, block कर देंगे. That is the problem. So the cities that are more creative will be the ones that have, yeah, that have leaders and institutions that do not block creativity. Very nice, absolutely correct. Last वाला भी देख लेते हैं. Typically do not start off as creative. ये तो कहीं पे भी नहीं बोला गया है. This is absolutely out of context. तो उसने बोला कि cities creative हैं, but institutions and people की बात की गई है, leaders की बात की गई. So option C is correct for question 4. So संस्कृति 3 out of 4. ठीक है. 5 देखते हैं. The 1968 study was about those children. तो जो children 3 to 5 years होते हैं, 98% of them are able to think out of the box. And जैसे जैसे 25 year old तक पहुंच जाते हैं, only 2% are able to think out of the box. So वो था वो study जो पीछे दिया हुआ था. तो उसको क्यों यूज किया गया है? As they get older, children usually learn to be more creative. Absolutely not. उल्टा हम लोग जैसे बड़े हो रहे हैं, वैसे तो मेरा creativity कम हो रहा है. A is so definitely wrong. Schooling today does not encourage creative thinking in children. Okay, so one thing you can think about कि हाँ, schooling today does not encourage creativity in children because we are starting with 3 to 5, मतलब preschool वाले age से we are starting in this particular context, and जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा creativity कम होते जाता है. So schooling today does not encourage creative thinking in children. Also you have to understand that this flows from the institutions वाला part. So all the institutions that we had created to foster creativity, वही institutions are the ones that are stifling, and that is the paragraph before the 1968 study वाला paragraph. So you have to remember that. ठीक है? So this is a fine option. This is fine. Second, the more children learn, the less creative they become. अब वहां पे चिल्ड्रन लर्निंग की बात नहीं की गई है. ऐसे नहीं बोला है कि जो चिल्ड्रन लर्न करेंगे तो वो क्रिएटिव बनेंगे. वी हैव बीन टोल्ड दैट एज चिल्ड्रन बिकम ओल्डर देयर क्रिएटिविटी रिड्यूसेस. अब वो जब ओल्डर हो रहे हैं तो समथिंग इज हैपनिंग विद देम दैट इज स्टाइफलिंग देयर क्रिएटिविटी, क्योंकि वही चिल्ड्रन 98% आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे थे. वही चिल्ड्रन 25 ईयर ओल्ड, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पीपल आर गेटिंग द सेम एक्सपीरियंसेस, राइट? सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट 25 ईयर ओल्ड में सिर्फ 2% है जो क्रिएटिव है. तो समथिंग इज हैपनिंग बिटवीन एजेस 5 to 25 दैट इज रिड्यूसिंग द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला पैटर्न. तो वो क्या है? तो यहाँ पे द मोर चिल्ड्रन लर्न द लेस क्रिएटिव दे बिकम कैन बी एन आंसर. आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, व्हिच इज अगेन फाइन. तो सी को भी रख देते हैं साइड में, बट देखते क्या. टेक्नोलॉजी टुडे प्रिवेंट्स चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग क्रिएटिव. दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. टेक्नोलॉजी प्रिवेंट्स चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग क्रिएटिव, तो मतलब वो 3 से 5 साल वाले कैसे क्रिएटिव हो गए?
8 से 10 साल वाले ज्यादा क्रिएटिव क्यों है कंपेयर टू 25 ईयर ओल्ड, राइट? सो ऐसा नहीं है कि मतलब टेक्नोलॉजी इज यूज्ड ओनली बाय 25 ईयर ओल्ड एंड नॉट यूज्ड बाय एनी अदर पॉपुलेशन ब्रैकेट, राइट? सो दी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बिट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ये बताया गया है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे क्रिएटिविटी कम होती जाती है। दिस इज बेसिकली द ग्राफ दैट इज। अभी टेक्नोलॉजी वी कांट से दैट यहाँ पे एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी और यहाँ पे बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी इज देयर थ्रू आउट। सो टेक्नोलॉजी प्रिवेंट्स चिल्ड्रन तो नहीं बोल सकते। अगर ये होता, अगर स्टडी में बताया होता कि जैसे जैसे पीपल यूज मोर गैजेट्स दे बिकम स्लाइटली लेस क्रिएटिव, देन आई कुड हैव सेड यस। बट टेक की बात ही नहीं की है, तो विल नॉट लुक एट टेक्नोलॉजी एट ऑल। सो वी हैव टू थिंग्स नाउ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आई विल बी ओके विथ ईदर आंसर, आई एम फाइन, मतलब ठीक है, 19-20 थोड़ा हो जाएगा, आई अग्री। तो इफ यू आर चोजन बी और सी, आई एम एब्सोल्युटली इंडिफरेंट, मतलब आई विल नॉट से दैट यू आर अ बैड कैंडिडेट और समथिंग। बट थोड़ा डीपली अगर डीप डाइव करेंगे ना, यू विल गेट इट। Schooling today does not encourage creative thinking in children. Why did I think that this was right? Because people go from 3 to 25, तो हर एक लोग, हर एक स्टूडेंट के साथ क्या होता है, वो स्कूल के थ्रू गुजरते हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाई it does not encourage creative thinking in children, which is obvious. और that ties up very nicely with the institutions वाला part that came before. तो पहले पैराग्राफ में बताया था कि अरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर से जो लोग इंस्टीट्यूशन जो बनाए थे हम लोगों ने, आयरोनिकली दीज इंस्टीट्यूशंस आर द वंस दैट विल किल क्रिएटिविटी। तो ये एग्जैक्टली ये वाला पैराग्राफ है यहाँ पे। और बताया गया है, स्कूल्स भी बताए गए हैं, आई थिंक इंस्टीट्यूशंस, टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, तो स्कूल बताए गए हैं। अब स्कूल के बाद वाले पैराग्राफ के अंदर एजुकेशन एक्सपर्ट क्यों ये स्टडी करेगा, राइट? Why will the education expert, why will this paragraph have an education expert who will talk about a story about children, and उसके पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में वहां पे बताया गया है कि इंस्टीट्यूट स्टाइफल क्रिएटिविटी, तो देन स्कूल्स हैज टू बी एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना। तो वो है यहाँ, द मोर चिल्ड्रन लर्न द लेस क्रिएटिव दे बिकम। अब ये तो कहाँ पे बताया नहीं है, लर्निंग की बात नहीं की है, एजुकेशन की बात की है, राइट? टू डिफरेंट थिंग्स। सो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बी इज अ स्ट्रॉन्गर ऑप्शन देन सी, बट आई विल नॉट फील बैड इफ यू हैड मार्क सी, इट्स ओके, बट बी सीम्स टू बी राइट हियर, ठीक है? सो संस्कृति 4 out of 5 टिल नाउ। लेट्स लुक एट द लास्ट वन एज वेल। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑथर्स कंक्लूजंस अबाउट द मोस्ट क्रिएटिव सिटीज इन द यूएस, पैराग्राफ 6 जो हमने देखा था, आर बेस्ड ऑन हिज अजम्पशन। तो बोला था ना कि लोग काम करते हैं आर्टिस्टिक जॉब्स में, 33% आर इन्वॉल्व इन आर्टिस्टिक जॉब्स दैट आर क्रिएटिव इन नेचर, अदर सॉरी नॉट आर्टिस्टिक, क्रिएटिव इन नेचर, एंड 50% इन द मोस्ट क्रिएटिव सिटीज आर इन्वॉल्व इन जॉब्स दैट आर क्रिएटिव इन नेचर, ये बोला है यहाँ पे। तो people who work with their hands are not doing creative work. Now there was one phrase that was written, people who work with their minds are doing creative work. सो माइंड्स को मैंने इक्वेट, मैंने नहीं मतलब ऑथर ने इक्वेट किया था क्रिएटिविटी के साथ, राइट? दूसरा बोला था कि जो माइंड से काम नहीं करते, विच माइट मीन वर्किंग विद देयर हैंड्स, दे आर नॉट डूइंग क्रिएटिव वर्क। इट सीम्स फाइन एट दिस पॉइंट इन टाइम। और देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन नॉन क्रिएटिव जॉब्स, राइट? तो यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि मोर देन हाफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन नॉन क्रिएटिव जॉब्स, जो उसने बताया कि 66%। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो 66% ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन नॉन क्रिएटिव जॉब्स, ये बताया गया है, और जॉब्स दैट फॉस्टर और डू नॉट फॉस्टर क्रिएटिविटी, ये वाला पार्ट बताया गया है, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये एक पार्ट है। देन ओनली आर्टिस्ट, सो बोथ ऑफ देम आर फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन। ओनली आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर्स एंड सो ऑन शुड बी वैल्यूड इन अ सोसाइटी, ये तो नहीं बोला गया है। बोला है कि दीज पीपल डू क्रिएटिव जॉब्स, बट उनको ही वैल्यू करो, बाकी सबको फेंक दो, ऐसा तो नहीं बोला है। तो सी इज नॉट राइट। डी, most cities ignore or waste the creativity of low wage workers, राइट? तो most cities ignore or waste the creativity, वो नहीं बोला गया है, यहाँ पे most creative cities in US बोला गया है। So minds equal to creative, ठीक है? I just check, tell you one thing. Yeah, yeah. See, a third of us across the United States, and perhaps as much as half of us in our most creative cities. So most creative cities के अंदर he is saying that 50% of them are working in creative jobs and the remaining 50% are not working in creative jobs. तो वो most creative cities की बात कर रहा है, तो वहां पे more than half the population नहीं बोल रहा है वो, he is saying that 50% of the people work in creative jobs and the remaining 50% of the people will be working in non-creative jobs. तो more than half तो नहीं बोल रहा कहीं पे भी वो। So B is also not entirely right. सी के अंदर तो गलत है। मोस्ट सिटीज इग्नोर और वेस्ट द क्रिएटिविटी ऑफ लो वेज वर्कर्स, राइट? तो मोस्ट क्रिएटिव सिटीज के अंदर वेस्ट द क्रिएटिविटी ऑफ लो वेज वर्कर्स नहीं बोल रहे हैं, ही इज सेइंग अबाउट दैट इन अ जनरलाइज्ड टर्म। क्रिएटिविटी जब वो गिन रहा है, तो अजम्पशन क्या है?
Assumption is that he is saying minds से जो काम करता है वो creative काम कर रहा है, right? That was the assumption. So what is the other assumption? People who are not working with their minds or people who are working with their hands are not doing creative work. So option A will be the one that will be right in this particular context. ठीक है? संस्कृति understood? More than half the population नहीं है. We are talking about creative cities. Creative cities के अंदर he is saying half the population is in creative jobs. And in all across US अगर देखेंगे including most creative cities and not so creative cities वहां पे 1/3 है. So it's not 1/3 in only creative cities. Yeah. So the answer here is option A. Fine. So that was the passage. It was one of the moderate-ish ones from CAT 17 slot 2, I believe. So that was the passage. There's one more passage that we have. It's a very small. Yeah, Shubham, it does not mention, but assumption है ना. So assumption need not be explicit. Assumption can be implicit as well. तो ऑथर क्या बोल रहा है कि माइंड से जो काम करेंगे वो क्रिएटिव है. तो उसका assumption क्या बना? Assumption is something which will be before the argument. हाँ, do we need to assume? So the question is assumption. Author has assumed. We don't need to assume. ठीक है? The author has assumed while speaking. तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे एमबीए करने से तुम्हारा करियर बनेगा. तो what am I assuming? There is no other career except MBA that there is no other जो भी path except an MBA that will grow your career. तो that is my assumption. So I'm not saying कि बाकी कुछ मत करो करके. I am saying MBA करो. Fine. So यहाँ पे the author is saying that जो माइंड वाला काम करते हैं वही क्रिएटिव काम करते हैं. तो जो माइंड वाला काम नहीं कर रहे वो क्रिएटिव काम नहीं कर. That was the thing. All right. One small passage we have now, and we'll do this, and then we'll finish it off. There is just this much of passage, or two paragraphs. Yeah, this one and this one. दो paragraph है. This is the first paragraph, or there is one paragraph. I've broken it down into two slides. So this is the first half of the paragraph. That is the RC passage, and this is the second half of the passage or the paragraph. That is the RC passage. Fine. And there are three questions. So I'll show you the questions. This is question one. Which of the following best describes what the passage is trying to do? Second question is, according to the passage, some governments still use typewriters because why? Why do they use typewriters? And the third and the last question is, the writer praises typewriters for all of the following reasons except. ठीक है? तो writer typewriter को praise कर रहा है. Now because we have seen the questions, we know it has got something to do with typewriters. And if you look at the first word, it will be obvious to you what the passage is about, typewriters. Right? So have a look at it. Maybe look at it for a couple of minutes and then we will start discussing this particular passage. ठीक है? तो discuss it till 8:50, 8:51ish. Take 2.5, 3 minutes and then we will quickly discuss this passage. All right. So let's look at this one and let's try to see if we are able to get it. This is a very easy passage, a manageable passage. Maybe one question I thought was slightly difficult.
बट टू क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इसमें देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड गेट मोर देन वन आंसर रॉन्ग. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. आई स्टार्ट एट 8:51 as promised, so 2 more seconds to go. All right, yeah. So let's look at this particular passage that we have, and let's try to read it. It's a very simple passage, and छोटा सा है, 3 questions ही हैं, तो it's fine. So typewriters are the epitome of a technology that has been comprehensively rendered obsolete by the digital age. Now, if you know what epitome is, what obsolete is, तो good. But नहीं पता तो भी you will get an idea, right? So typewriters are the epitome of a technology. Typewriters कुछ technology है, कुछ तो है technology का. That has been comprehensively rendered obsolete by the digital age. तो टाइपराइटर्स और डिजिटल एज, आपको टाइपराइटर्स दिखते हैं कि आजकल नहीं दिखते, राइट? सो डिजिटल एज के अंदर टाइपराइटर्स की कोई जगह नहीं है. टाइपराइटर्स हैव बीन रेंडर्ड ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट इज यूजलेस इन अ वे. ठीक है, मतलब यू कांट रियली यूज इट, देयर आर बेटर टूल्स दैट आर अवेलेबल. सो दैट इज बेसिकली व्हाट इट मींस. सो टाइपराइटर्स इन अ डिजिटल एज हैव बीन रेंडर्ड ऑब्सोलीट. दैट्स द इंक कम्स ऑफ द रिबन. दे वे अ टन, बहुत हेवी होते हैं. रिबन के अंदर से कुछ इंक आता है. एंड सेकंड थॉट्स आर अ डिजास्टर. जैसे हम लोग अभी टाइप कर रहे हैं एंड आई मेक अ मिस्टेक, आई कैन यूज बैक स्पेस एंड आई कैन इरेज दैट. ठीक है, बट टाइपराइटर में बैक स्पेस नहीं कर सकते. यू विल हैव टू यूज सम व्हाइट इंक एंड देन इरेज एंड देन टाइप अगेन एंड सो ऑन. सो सेकंड थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होती इन टाइपराइटर्स. बट दे आर ऑल्सो पर्सनल, पोर्टेबल एंड अबव ऑल प्राइवेट. सो प्राइवेट होते हैं. नाउ लैपटॉप अगर तुम्हारे पास है या कुछ भी है, तो यू पीपल कैन कम एंड सी दैट थिंग एंड दे विल बी एबल टू एक्सेस दैट. You can share it and all those things can happen, but typewriter में वो सब चीजें allowed नहीं है. तो private, it's very important that they are private. Type a document and lock it away, and more or less the only way anyone else can get it is if you give it to them. So अगर एक डॉक्यूमेंट टाइप किया और उसको लॉक कर दिया तो किसी को मिलेगा नहीं, बिकॉज देयर इज नो ऑनलाइन कॉपी एज सच ऑफ. ठीक है, दैट इज व्हाई द रशियंस हैव डिसाइडेड टू गो बैक टू टाइपराइटर्स इन सम गवर्नमेंट ऑफिसेस. क्वेश्चंस अगर देखें तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफिसर्स समवेयर. एंड व्हाई इन द यूएस सम डिपार्टमेंट्स हैव नेवर अबैंडन्ड देम. क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं. Yet it is not just the resistance to algorithms and secret surveillance that keeps typewriter production lines, right? So resistance to algorithms and secret surveillance. तो surveillance के इसमें ही सिर्फ because of only that typewriters are still alive. That is not the case. Uh, yeah, that keeps typewriter production lines, well, one at least in business. The last British one closed a year ago. तो ब्रिटिश के अंदर कुछ टाइपराइटर का एक बंद हो गया, जो लास्ट वाला था. Nor is it only the nostalgic appeal of the metal body and the stout, well-defined keys that make them popular on eBay. तो दे आर पॉपुलर ऑन eBay, अभी भी पॉपुलर है, भले ही वो उनका मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है. बहुत ही लिमिटेड कंपनीज मैन्युफैक्चर करते हैं. इनफैक्ट ब्रिटिश के अंदर लास्ट ब्रिटिश वाली कंपनी क्लोज हो गई 1 साल पहले. ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है, बट वी नो दैट दे आर स्टिल पॉपुलर ऑन ईबे. तो क्यों ईबे है? तो यहाँ पे बोला कि नॉर इज इट ओनली, ओनली इज अगेन अ नाइस वर्ड, ओनली द नॉस्टैल्जिक अपील ऑफ द मेटल बॉडी. सिर्फ वो दिखने में अच्छे है ना, करके वो ईबे पे ज्यादा बिक रहे हैं. इज इट दैट द केस? दैट इज नॉट द केस, राइट? अ टाइपराइटर डिमांड समथिंग पर्टिकुलर, attentiveness. Now this is very important. So we are talking about attentiveness in this particular context. So typewriter demands you to be attentive. That's why maybe it is popular on eBay as well. By the time the paper is loaded, the ribbon tightened and the carriage returned, the spacing and the margins set, मतलब चालू करने के पहले, there is a big premium on hitting the right key. Because you can't erase things, जो हमने पहले भी देखा था. There is a big premium on hitting the right key. So it's very important that you are attentive when you are using a typewriter. That means sorting out ideas, pulling together a kind of order, and organizing details before actually striking out. तो एक बार मैंने लिख दिया तो वही होने वाला है. That is basically going to be the final word, and that's why I have to be very clear about what I need to write, and that's why typewriters are popular as well among some people. There can be no thinking on screen with a typewriter. मतलब देखा फिर सोचा फिर पीछे गए फिर सोचा फिर लिखा, वो सब नहीं कर सकते. Nor are there any easy distractions. A typewriter does only one thing, allows you to type. ठीक है? No online shopping. There is no online shopping का concept. No mails, no Twitter or X at this point in time. No need even for electricity. Perfect for writing in a remote hideaway. ठीक है? So यहाँ पे कोई और चीज की जरूरत नहीं है. It is a very bare minimum thing that it will help you type. That's it. और कुछ नहीं करेगा वो. Whereas if you are using a phone or a laptop or a desktop or a tablet or anything, you are basically trying to do multitasking or you will get distracted because of some other notification. तो टाइपराइटर में वो नहीं होगा. ठीक है? So no distractions. The thinking process is accompanied by the encouraging clack of keys and the ratchet of the carriage return ping. Right? तो क्या हो गया? Clack of keys, ratchet of the carriage return ping. These are called, ठीक है, ओनोमाटोपोइया. ओनोमाटोपोइया क्या होता है? ओनोमाटोपोइया इज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू
गिव दैट ऑडिटरी फील व्हेन यू आर राइटिंग अ वर्ड। तो पिंग का मतलब है जैसे यू हियर द वर्ड पिंग, यू विल हियर दैट टाइपिंग के टाइम पे जो टिंग करके आवाज है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो क्लैक ऑफ कीज, तो क्लैक जो भी आवाज आएगा वो, रैचेट ऑफ द कैरेज इज जो कटक करके द रैचेट द कैरेज रिटर्न्स, एंड पिंग इज बेसिकली द ring that you get when you're using a typewriter. ठीक, तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू डू। तो पैसेज क्या कर रहा है, पैसेज टाइपराइटर्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहा है, एंड द पैसेज इज ट्राइंग टू टेल यू दैट टाइपराइटर्स आर नॉट वेरी यूजफुल in today's digital age, obsolete हो गए, that was the first line, but a lot of government organizations use it because they are private. Second thing, मतलब the entire privacy can be maintained and the documents cannot be shared easily with people. इसके लिए government organizations are definitely using them. Also, they are very popular on eBay in spite of the manufacturing not being done well. And why are they popular? Because they allow you to be attentive when you're typing. तो बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन हटा के अगर आपको सिर्फ टाइप करना है एंड यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू आर टाइपिंग, देन टाइपराइटर्स आर दी बेस्ट पॉसिबल थिंग। एंड द ऑथर रेमिनिसर्स, द ऑथर ट्राइज टू create that sound and that environment of a typewriter being used. ठीक है, so which of the following best describes what the passage is trying to do? It's talking about the relevance of typewriters maybe in today's digital age, या फिर मतलब क्या क्या वो चीजें जिसकी वजह से टाइपराइटर्स आर एक्चुअली यूज। So let's look at the first one. तो यहाँ पे first option बोलता है it describes why people continue to use typewriters even in the digital age. So that's exactly what we're trying to say. Why people continue to use, एक तो privacy concerns and the second thing is attentiveness. तो ये तो more or less correct है जो बोल रहे हैं. It argues that typewriters will continue to be used even though they are an obsolete technology. तो argues that typewriters will continue to be used, ठीक है, but मतलब even though an obsolete technology, वो that is not what it is trying to say, right? It's trying to say, it's trying to give you reasons why people are using. तो it argues that ये पूरा conclusion हो गया लास्ट का, will people will continue to be used। अब वो कहीं पे भी नहीं बोल रहे, the author is saying that today typewriters are being used। ऐसे नहीं बोला कि आगे जाके टाइपराइटर हमेशा यूज होते रहेंगे, टाइपराइटर्स विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन, ऐसा तो कभी नहीं बोला है। तो दी ऑप्शन दैट वी हैव, योर ऑप्शन बी जो है ना, वो ए से उतना अच्छा नहीं है। ए बेसिकली सेज व्हाई पीपल कंटिन्यू टू यूज, आज की बात करिए कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ए इज बेटर देन बी। बी टॉक्स अबाउट विल कंटिन्यू टू बी यूज, फ्यूचर टेंस की बात ही नहीं हो रही गई। देन इट हाइलाइट्स द पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टाइपराइटर्स। Highlights the personal benefits of using typewriters, yes, but we're also talking about it in the government का context कि privacy भी maintain करने के लिए अभी भी Russians and the US governments are using typewriters। तो सिर्फ personal benefits का तो यहाँ पे passage नहीं बात कर रहा। ठीक है, so again not entirely true। It shows that computers offer fewer options than typewriters। अब computers की बात ही नहीं हुई है, digital age बोला गया है, but they have not said that computers offer fewer options than typewriters। कहाँ पे fewer options है? In fact, computers will give you a lot more options than typewriters। You get the option to erase whatever you have written, that is the best option that you have, right? तो ये तो कहीं पे भी नहीं बोला गया। So option A is the correct one। It describes why people continue to use typewriters even in the digital age, privacy के लिए and attentiveness के लिए, that's it। ठीक है, एंड ईबे पीपल बाय बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया एज वेल। तो तीसरा वाला भी बोला है, नॉट ओनली नॉस्टैल्जिया बोला है, बट नॉस्टैल्जिया के लिए भी लोग यूज करते हैं, दैट इज व्हाट इट इंप्लाइज। तो सेवेंथ क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट in this particular context। Next देखते हैं, according to the passage some governments still use typewriters because, so I generally tell people कि आप ना 3 क्वेश्चन करके आ जाना, 4 क्वेश्चन करके आ जाना in the VRC section and those 3 or 4 questions should be absolutely right। This question will be one of the ones that you will have to attempt in any VRC section। ठीक है, तो some governments still use typewriters, why? They do not want to abandon old technologies that may be useful in the future। ये तो कहीं पे भी नहीं बताया, this is a very stupid story। They are doing it because of privacy reasons as we had seen। They want to ensure that typewriter production lines remain in business। ये तो कहीं ये भी नहीं बोला गया है। They like the nostalgic appeal of the typewriter, again not a very strong option। They can control who reads the document। So in terms of privacy, typewriters are better than computers and that's why they will still use typewriters। That's why option D is correct। So 8D is right। संस्कृति 2 ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। द राइटर प्रेजेस टाइपराइटर्स फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। तो प्रेज क्यों करते हैं टाइपराइटर्स को? वन तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ अटेंटिवनेस के लिए बोला था ना, यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग, इवन व्हेन यू आर टाइपिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सारी चीजें हैं, बिकॉज ऑफ दैट द राइटर प्रेजेस टाइपराइटर्स, मोर और लेस ये है। फाइन, नाउ ये वाला इज थोड़ा सा आई वुड से मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अनलाइक कंप्यूटर्स दे कैन ओनली बी यूज फॉर टाइपिंग। तो प्रेज करता है, यस देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस बोला था, no email, no Twitter, and all those things had been mentioned। So the author praises for this reason। So this reason is true। अपने को एक्सेप्ट निकालना है।
Second, you cannot revise whatever typed on a typewriter. Brilliant. ये भी सही है. You cannot erase, and that's why the author says कि भाई ये तो मतलब अच्छी बात है. You have to think and then you have to type. That's very important. So B is also fine. Option C, typewriters are noisier than computers. Now the writer reminisces about all the sounds that are associated with the typewriter. तो the ratchet of something, जो बोला है, ping बोला है last में, and the clicking of the keys, right? Clack of keys, ratchet of carriage return, ping. So all these things are talking about the sound. ठीक है. But typewriters are noisier than computers. So he appreciates the sounds of the typewriters. So that is fine. Praises the sounds, which is fine. टाइपराइटर्स आर मेसियर टू यूज देन कंप्यूटर्स. अब मेसियर है करके टाइपराइटर के बारे में अच्छी चीजें बोल रहा है क्या वो? सो मेसियर कहाँ पे बोला था? बहुत ही स्टार्टिंग में बोला था, राइट? दे वे अ टन, इंक कम्स ऑफ द रिबन, ये सारी चीजें बोले थे. एंड सेकंड थॉट्स आर अ डिजास्टर. बट तो ये ट्रांजिशन वर्ड है ना, तो द ऑथर अग्रीज विद दीज थिंग्स. द ऑथर डज नॉट प्रेज द टाइपराइटर बिकॉज इट इज मेसियर टू यूज. इट इज बिगर, लार्जर देन अ कंप्यूटर, वेस्ट मोर देन अ कंप्यूटर. उसकी वजह से द ऑथर इज नॉट प्रेजिंग द टाइपराइटर. But the author is definitely praising the typewriter because there is a clacking of keys, clack of keys, and the ratchet of that carriage return and ping. So ये सारी चीजें हैं. That's why noisier को the author is praising, yes. But messier को the author is not praising. The author has mentioned messier, but he has not praised the typewriter because it is messier. But out of these two, if you mark any one, I will not really blame you. It's okay. ये 50-50 वाला एक question है, I would suggest. क्योंकि एग्जाम के टाइम पे you will not really have so much of time to think about. But the author talks about noises in a much more positive manner than he talks about the typewriters being large and cumbersome to use. So that's why the correct answer will be option D. Typewriters are messier to use than computers. So 3 on 3 Sanskriti, all 3 are right. Okay, so I think itna 7 out of 9, which is a good effort. Very good effort, I would say, for this particular set. Okay, so those were the questions that we had in these two passages. Let me know if you have not been able to get something. कुछ भी अगर कहीं पे clear नहीं है या कुछ है, तो let me know. I'll just wait for some seconds. And if there are no doubts, everything is clear, then we will close this session. And I'll see you again tomorrow. Tomorrow's daily drill is going to be on data interpretation. So there are two sets, 8 questions in total that we have in terms of data interpretation. So I think the test will be live in another hour or so. So 10 o'clock के आसपास test live हो जाना चाहिए. And take the test throughout the day. You can take it at any point in time. Even after tomorrow also you can take the test. कुछ issue नहीं है. But make sure that you solve those two sets because they are very interesting sets. And I don't think if I should give a spoiler, but one of them is exceptionally difficult, right? So do have a look at it and figure out which one is which, and we'll again meet tomorrow with the daily drill for tomorrow. Yeah, all right. Chalo. So have a great evening ahead, everyone. Have a great day tomorrow as well, and I'll see you again in the evening tomorrow. So stay tuned for tomorrow's session. All right. Bye, everyone.